Good evening, class. Today we are going to start a new chapter of class 9th, and that is why do we fall ill. Okay, because previous we have completed our last topic of diversity in living organisms. After the completion of that topic, we have to just start a new chapter, and that is why do we fall ill. हम बीमार क्यों पड़ते हैं? Okay, now before starting, I am going to tell you that is the most important chapters because most of the questions are generally asked from that type of chapters, that what is disease, what is health, and how our health is affected by different types of bacteria and virus. Several types of questions are generally arises from that chapter. So according to the exams, this is the most important chapter and you all have to focus very carefully. So start from the most important point. Why do we fall ill? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? When several types of different types of agents which are generally found in our environment that causes harmful effect on the human beings, and that time human beings suffer several types of problem. That's why the human beings get special type of disease. Okay, हमारे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस है, प्रोटोजोअन्स हैं, वॉर्म्स हैं. ये क्या करते हैं? किसी न किसी थ्रू से हमारे बॉडी के अंदर एंटर करते हैं. ठीक है, व्हेन दैट डिजीजेस आर एंटर्स इन अवर बॉडी, डेफिनेटली अवर बॉडी विल बी डैमेज्ड. ठीक है, हमारी जो बॉडी है वो डिजीज कैरी करती है, एंड दैट डिजीज इज आल्सो वेरी डेंजरस थिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. But today we are going to discuss that what is the exact meaning of disease and which type of agents generally created the disease for human beings as well as animals and plants also. Okay, now most important point is that disease means what is the meaning of actual definitions of disease. So first, disease can be defined as abnormal मतलब जिसका ढंग एक जैसा नहीं होता है. एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ पार्ट मे बी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम. ठीक है, या तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन से या उसके ऑर्गन सिस्टम में अगर मल फंक्शनिंग हो जाए, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिजीज. ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, वेदर इट इज लिविंग्स में ह्यूमन बींग्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं. अगर उन ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के किसी स्पेशल ऑर्गन में या फिर उसके ऑर्गन सिस्टम में अगर मल फंक्शनिंग हो जाए, मल फंक्शनिंग मतलब किसी चीज का रुक जाना, बिगड़ जाना, दैट इज कॉल्ड द डिजीज. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम रिपीटिंग अगेन. डिजीज कैन बी डिफाइंड एज abnormal conditions of human body part or organ systems and organism. Okay, organ and organs, different types of organs make organ system and organ system makes organism. एक complete organism बनाने के लिए हमें cells चाहिए. Cells, group of cells makes tissues and tissues make organ and organ makes organ system and organ system makes organism. organism मतलब हम जैसे organism. ठीक है, तो ये सारे steps होते हैं. ठीक है, now I am repeating again. cell ये tissue बनाते हैं. ठीक है, tissue से organ, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम जो यहाँ पे दिया हुआ है. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स लाइक हार्ट, किडनी वगैरह ये सब, एंड दैट्स फॉर्म्स ऑर्गेनिज्म. ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. सो हियर वी हैव टू डिस्कस दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डिजीज वी हैव टू नो द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ. हेल्थ का मतलब क्या होता है? ओके, नाउ coming to the next point, according to WHO means World Health Organizations. Okay, according to WHO in 1948. Okay, when in 1948, according to WHO, they have concluded the different types of state of complete physical, mental and social well-being is called health. Health का मतलब होता है if the humans are generally totally physically fit. Physically means they may be there is no symptoms of any structures may be like fractures, sprain, dislocation and many more things. अगर वो फिजिकली बाहर से ठीक दिखता हो या मेंटली मीन्स इंटरनल साइड अगर अंदर से भी वो ठीक दिखता है, and social well-being मतलब their appearances are generally looks very positive, that means that person is a very healthy. ठीक है, हेल्थ का मतलब होता है WHO ने बताया था कि अगर कोई इंसान
कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल या सोशल तरीके से अगर पूरी तरीके से फिट है वो हेल्दी पर्सन्स कहलाता है, ठीक है। इज कॉल्ड हेल्थ, उसे हम हेल्थ कहते हैं, और जो हेल्थ होता है वो एक हेल्दी पर्सन्स का होता है। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव गिवन यू। नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डिजीज एंड हेल्थ, विच टाइप ऑफ एजेंट्स जनरली क्रिएटेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं जो जनरली ह्यूमन बींग्स में बीमारी को फैलाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू टुडे वी हैव टू डिस्कस 5 टाइप्स ऑफ एजेंट्स। आज जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ 5 प्रकार के एजेंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल एजेंट्स। ओके, बायोलॉजिकल एजेंट्स मींस, बायो मींस लाइफ एंड लॉजिकल मींस स्टडी। जो लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजी, एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स मींस सम थिंग्स दैट हैज अ लाइफ, ऐसी चीजें जिनमें जान होती है। वी आर टॉकिंग टू एग्जांपल्स लाइक सेवरल टाइप्स ऑफ पैथोजेंस, ठीक है, ये पैथोजेंस है। पैथोजेंस के अलावा जैसे वायरस आते हैं, वायरस इज आल्सो अ कॉजेटिव एजेंट, वायरस से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। बैक्टीरिया इज आल्सो देयर, बैक्टीरिया इज आल्सो अ पैथोजेंस, एंड प्रोटोजोअन्स, ठीक है, जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, ये सब बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। दे आर लिविंग्स, ये लिविंग्स होते हैं, एंड probably virus has been not introduced any special type of kingdom according to their living and non-living structures, but bacteria, protozoans and many more special type of agents which create disease in human beings. तो biological factor में ये सारी चीजें हैं जो human beings में बीमारियां फैलाती हैं। Okay, now next we have to discuss next important point, nutritive agents। हमने biological agents देख लिया, now we have to discuss the nutritive agents। Okay, now nutritive agents clears that if the, so basically we have to see that in nutrients agent, if the human beings the proper lacking of carbohydrate, vitamins and minerals, अगर किसी इंसान के शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स और भी बहुत सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स एजेंट्स होते हैं, अगर उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स होता है, दैट डिजीज इज आल्सो कंसीडर्ड एज न्यूट्रिएटिव एजेंट्स, इनके कारण वो बीमारी होती है। Okay, now coming to the next point, we have to discuss the chemical agents। Okay, this is the most important topic for your that chapters। Okay, chemical agents comparison अगर मैं बात करते हैं chemical agents की, there is a several types of chemicals which are found inside our body and outside the body। हमारे body के अंदर भी और body के बाहर भी chemical agents पाए जाते हैं, but depending upon their natures, chemical agents are categorized into 2 parts। The first is endogenous and next is exogenous। Okay, now endogenous की अगर हम बात करते हैं तो endogenous का मतलब होता है those enzymes and hormones like urea, like uric acid and enzyme and hormones are found inside the body are called endogenous chemicals। endogenous का मतलब होता है अंदर and exo means होता है बाहर। Okay, now I am repeating again, endo means inside and exo means outside। several types of hormones, several types of urea and several types of enzymes is also found in human beings for regulating the different types of metabolic activity, and that time all the essential actions will be taken by that type of endogenous enzymes। but अगर इनकी कमी हो जाए, if there is a disbalance in nature, if there is a lacking of nature in our body will also not respond well। अगर इनकी कमी हो जाए या हमारे शरीर से ज्यादा एक्सेस फॉर्म में अगर ये चीजें बाहर आने लगेगी, that means our human beings are totally behave लाइक जिस मैनर, हमारा जो बॉडी है वो एक मल फंक्शनिंग के वे में आ जाएगा। इसका मतलब हमारा बॉडी फंक्शंस प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। ओके, सो इंडोजिनस हार्मोन्स एंजाइम्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर इनकी कमी होती है या ज्यादा एक्सेस वे में फॉर्मेशन होता है तो भी ये इंसानों के लिए प्रॉब्लम करते हैं। ओके, नाउ exogenous, exo means I already told you that exogenous means several types of gases, several types of dust and fumes which are found outside the environment, and that is called the exogenous enzyme। and several types of allergens। allergens means ये ऐसे allergens होते हैं जो बीमारी से एलर्जी हमारे ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में क्रिएट करते हैं, that is called allergens। ठीक है, allergens हम उनको कहते हैं जो हमारे शरीर में एलर्जी को क्रिएट करते हैं। ठीक है, एलर्जी क्रिएट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम एलर्जेंस कहते हैं। सो अपने एनवायरमेंट में काफी ज्यादा मात्रा में डस्ट है,
fumes hai, and several types of gases are spreaded in our environment, and that gases and fumes are also create several types of disease in human beings. Okay, so ये बहुत important factor है exogenous and endogenous. कई बार difference जो होते हैं इन दोनों के बीच में वो पूछे जाते हैं, what is the difference between exogenous and endogenous, so you all have to learn very well. Now coming to the next point, the physical agents. Physical agent is the most important. There is a several types of आउटसाइडर एजेंट्स विच आर जनरली क्रिएट्स डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स. ऐसे बहुत सारे आउटसाइडर एजेंट्स हैं जो ह्यूमन बींग्स में डिजीज को कैरियर करते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस डिजीजेस, हीट अगर ज्यादा हीट देंगे अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, डेफिनेटली देयर बॉडी स्किन विल बी डीनेचर्ड, उनकी जो बॉडी स्किन है वो डीनेचर्ड हो जाएगी. कोल्ड से भी यही प्रॉब्लम होते हैं. ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट एंड मेजर टास्क. एंड रेडिएशंस मतलब जो हमारे अल्ट्रावायलेट या यूवी रेज हैं वो हमें पता है कि वो किस प्रकार के डेंजरस रेज जो है हमारे एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर का हीट होना, ठीक है, सारी चीजें पॉसिबल होते जा रही है और ह्यूमन बींग्स भी उनसे अफेक्ट हो रहा है. बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिजीज क्रिएटिंग several types of disbalance in human beings and also causes radiations, स्किन कैंसर. ठीक है, ये जो रेडिएशंस है वो स्किन कैंसर कर रहे हैं जिस कारण से ह्यूमन बींग्स ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट इज दैट मैकेनिकल एजेंट्स. अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल एजेंट्स, मैकेनिकल मीन्स इफ योर बॉडी इज हर्ट विद सेवरल टाइप्स ऑफ structures like talking about the iron, talking about the wood, if you get injured with that type of material, definitely you come in the class of mechanical agents. Mechanical agents का मतलब है अगर कोई इंसान किसी लोहे से चोट लगना, कहीं गिर जाना या किसी भी चीजों से जब उसे प्रॉब्लम्स होती है, वो भी एक प्रकार के डिजीज के ही कैटेगरी में आते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल एजेंट्स. अब हम बात करते हैं विच टाइप ऑफ मैकेनिकल एजेंट्स क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज, ये बीमारियां करते हैं. जैसे अगर कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इंजरीज हो जाएगी. काफी दिनों तक ह्यूमंस जो है वो बेड रेस्ट करते हैं इंजरी की वजह से, और इंजरी की वजह से उनके बहुत सारे मेटाबॉलिक सेल्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है जिस कारण से ह्यूमन बींग्स को स्पेशल प्रकार के डिजीज हो जाते हैं. नाउ स्प्रेन, सेवरल टाइप्स ऑफ पेन ऑकरिंग इन ह्यूमन बॉडी. फ्रैक्चर्स में टूट जाना. डिसलोकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर. इन डिसलोकेशन द बॉडी बोन्स आर जनरली डिसलोकेट फ्रॉम देयर एडजेक्ट पॉइंट. ये अपने बॉडी से एडजेक्ट पॉइंट से डिसलोकेट हो जाते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द डिसलोकेशन. So coming to the next and most important topic, we have discussed today what is disease, what is health, and this type of agent creates disease in human beings like biological, nutritive agents and chemical agents. Chemical agents is further divided into two parts, exogenous and endogenous. And now we have also discussed the physical agents. Physical agents में हमने रेडिएशन देखा, ठीक है. रेडिएशंस के अलावा बहुत सारे ह्यूमिडिटी, कोल्ड और हीट के बारे में स्टडी की. एंड लास्ट प्रोसेस था हमारा मैकेनिकल एजेंट्स. ऐसे एजेंट्स होते हैं जो हमें फिजिकली फॉर्म में हमको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कहीं गिर जाने की वजह से इंजरीज, फ्रैक्चर्स, डिसलोकेशन, जो भी चीजें आती हैं वो सब के सब किसी न किसी प्रकार की बीमारी को क्रिएट करते हैं. सो I think this is enough for today class because we have started and we have just discussed the only introduction part of that disease. Next day we will study some more important topic. Till then, whatever I have taught you, you all have to mention in your fair notebook. Okay, thank you students.